Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. We have a subreddit, Modern Warrior. नई नई चीजें याद करता रहता हूँ मैं. Modern Warrior, भाई. It is called Modern Warrior. What can I do? Modern Yodha, Modern Warrior. You can go to the subreddit. जाइए भाई साहब, आप सबरेडिट पे जाइए और आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें, हो सकता है बहुत लाउड हो. हाँ, तो मॉडर्न वॉरियर है, जाओ और अपनी जितने भी रिकमेंडेशन देने हैं वहाँ पे दे सकते हो, जितने भी तुम्हें रिएक्शंस देने हैं. बहुत सारी रिसर्चेस लोग शेयर करते रहते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, बहुत बढ़िया. अगर आर्टिकल्स होंगे, बहुत कुछ होगा तो मुझे पढ़ने में मजा आएगा. मैं भी उसमें अपने विचार शेयर कर सकता हूँ. हम लोग रिएक्ट भी कर सकते हैं कुछ बढ़िया आर्टिकल्स पे, कुछ बढ़िया फाइंडिंग्स पे. अपनी प्रॉब्लम्स भी भेज सकते हैं वहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्व भी करते रहेंगे. वहाँ से मैं प्रॉब्लम्स उठाऊंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, सोल्यूशन बनाऊंगा. मैं रोज डेली सोल्यूशंस लिख रहा हूँ, मैं रील्स में भी डालने वाला हूँ सोल्यूशंस. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. अभी इस बेचारी लड़की का, ओ माई गुडनेस, उसका ही ब्रोक अप विद हर. We're going to be reacting to this. No judgments. Okay, let's really see what's going on here. Okay, guys, I feel already very bad. This bitter earth. इस तुम्हारा वो सॉन्ग बज रहा है क्या? In the end of the daylight. In the daylight, in the end. तुम लोग को पता है किस गाने की बात कर रहा हूँ मैं. तुम्हारा उस मूवी में बजा ही है, तुम्हारा लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की मूवी कौन सी है जिसमें वो लोग आइलैंड में होते हैं, उसमें गाना बजता रहता है, दिस बिटर अर्थ. ओके, तुम लोग नीचे लिख दोगे, टॉप कमेंट्स होगा, मुझे पता है. हैम. Oh, she's like, she was already crying. So she was like, लाइट सेट कर ली, कैमरा ऑन रखा, कैमरा प्ले किया. But you know, it could happen, yaar. It could happen. I can see it. So why not, yaar? You know, probably you are crying. You've been crying all day. Probably तुम breakfast ऐसे ही बना रहे थे. And it's grief. This is grief. One can be actually crying throughout. Like लोगों का ब्रेकअप होता है, लोगों का दिल का चूमर हो चुका होता है. If you're reading the title of this video. Oh my goodness, I don't know. This was going to be. I thought this was like a Hindi speaking person. It is true. Okay. I promise it's not clickbait. All I'm right. recording this the day after it happened. Alright. You are watching this a few weeks after, so I have time to process. But I thought this might help me just get my emotions out. And What's with the music, yaar? That's what I don't understand. So while you were editing, you were like, my tears and my emotions and the raw experience that I have gone through is not enough कि मेरे को music भी ठोकना है इसमें. you know, I've been honest and real with you about a lot of the good things. So I want to do the same about the not so great things. And if you're new here, hi. Namaste, my name is Avanti. I was with my partner, Stephen, for almost 5.5 years, and we just broke up. And your first question is why, given... साले लोग इतने नालायक होते हैं. It's like your first question. Why would I answer? Like, why would I share my private information with all of yous? Only because तुम लोग भाई, first question, not even कि Avantika, what's her name यार? Avanti, how are you feeling? Avanti, how was your day? Avanti, hey, life is beautiful, isn't it, Avanti? And just a couple weeks ago, I posted a video talking about how we broke up 5 years ago. Ironically, also in April. We met in college. We stayed in Boston. We went to college at Harvard. We stayed in Boston for a year after, and then he was in China and Vietnam. At the same time? Wow. So this is what happens when you go to New York. No, she didn't go to New York. She went to Boston. But you date Doctor Strange. He's at the same time at 2 different places. We did a few years of long distance, and in early 2021, he came to India. That's where I was where I am during the pandemic.
And he spent some time here. And by the way, I'm not like being mean. एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में बस यहाँ पे मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हम लोग चाहे कितने भी बीसी कर लें, हम कभी भी किसी चीज़ को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। किसी का पेन हो सकता है यहाँ पे थिएट्रिकलिटी, और ऑफ कोर्स देयर इज एन अटेम्प्ट कि hey, I can make some views on this. I've kept my relationship public. People are interested. This will get views. So I'm gonna make video as well. I'm gonna put this fucking music behind, जिससे चीज़ें थोड़ी सी amplify हो, थोड़े से emotions आप भी सहो जो मैं सह रही हूँ, थोड़ा सा empathize कर पाओ emotion की म्यूजिक वैसे। Even though I would argue कि अगर म्यूजिक ना डाला होता तो इंसान ज़्यादा relate कर पाता, ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ relate कम कर रहा है, बट हम ये discredit नहीं कर सकते कि whatever she is feeling, this person is feeling is not real, या फिर ये मजाक है, या फिर इसको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। इंसान है, उनका जो मन करे, जो भी उनको करना है वो करेंगे। आप 100% मोटिवेशन किसी के पीछे जिंदगी में क्या हो रहा है जब तक उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, आप नहीं बता सकते, आप नहीं जान सकते। तो मत करो जज, थोड़ा सा एंजॉय करो। रिएक्शन जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर ये भी खोल के देखती है, आई एम अज्यूमिंग मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर तुम भी देख रही हो तो तुम्हें हंसी ही आएगी। तुम भी थोड़ी सी लेविटी ला रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं, लेकिन मैं डायरेक्टली मीन नहीं होऊंगा। तो ये हमारा कोशिश, आप भी कभी लाइफ में कभी मत करना। चाहे कोई कितनी उलझुलूल, इसकी बात ही कर रहा हूँ, कोई भी उलझुलूल चीज़ कर रहा हो, कोई एकदम ही तुम्हारे दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाए, तुम किसी का बिहेवियर देखो, तुम कहो मैं इसको क्या सोच रहा था, ये कैसे बिहेव कर रहा है। तुम्हें नहीं पता उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है। बहुत सत्य बात बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता। पहला, तुम उस इंसान को कभी जिंदगी में पर्सनली नहीं जानते थे। दूसरा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है। मत करो, कुछ नहीं पता, हाथ जोड़ो, निकल लो, छोड़ो, मजे कर पाओ, थोड़े से जोक्स डाल दो। जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज यही है कि जितना बड़ा दुख हो, चाहे कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो, अगर उसमें एक इंसान आए बैठे तुम्हारे बगल में और एक हल्का सा उसको, जितना भी बड़ा अभी इस वक्त ग्रेविटी में हम देख रहे हैं उसको, चीजें अभी नीचे सिंक हुई हुई हैं, उसको हल्का सा लाइटनेस प्रोवाइड कर पाए, एक जोक प्रोवाइड कर पाए, और सब लोग जितने भी थे, जितने सीरियस थे, एक सेकंड के लिए थोड़े से दे जस्ट ब्रेक दैट एंड अ स्लाइट लाफ्टर सीक्स इन, और you understand what I'm saying, seeps in. The intention of potentially moving here, because when you're in a long distance relationship, having some sort of an end meeting point is important. I never once said you must move here, etc. But he decided to. Moved in the middle of the pandemic, and so it was definitely tough. Mumbai is also a tough place for anybody coming in and potentially making friends and things like that. He would also keep leaving, both for work and personal reasons. So all of that doesn't really matter. What matters is he decided that he does not like it here, and he doesn't see a future with him being here. Well, at least she's being incredibly real. मेरे को लगा ये वीडियो होगा, सो आई जस्ट वांट टू से समथिंग। बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक ये ट्रेंड यूट्यूब का ऑफ मेकिंग आई ब्रोकअप वी ब्रोकअप वीडियो। सो मैं पता है डेविड डोब्रिक एंड वट एवर हिज गर्लफ्रेंड, इंडियन गर्लफ्रेंड जो भी थी, आई एम वेरी पुअर विद नेम्स, सो इसमें मेरे को वो मत देना तुम। लीसा नाम था उसका, अरे यार बहुत फेमस इंसान है ना वो। तुम लोग को पता है ऐसे वीडियोस, देयर हैव बीन सो मेनी ऑफ दीस। एंड एक टाइम पे ट्रेंड हुआ करता था 2013, 2014, 2015, लाइक दिस वाज द यूट्यूब थिंग। एवरी यूट्यूबर यूज्ड टू बी लाइक, वी ब्रोक अप, एंड देन दे लाइक, वी आर गोना बी फ्रेंड्स, वी विल स्टे फ्रेंड्स, इट वाजंट वर्किंग आउट, थिंग्स वर पुअर, एंड दे आर लुकिंग एट ईच अदर एंड लाइक नॉटिंग, एंड इट्स ऑल बुलशिट, बट दे डिड इट, एंड यार एंड द थिंग इज all these videos sort of had the same script as well, कि हम सब अभी भी कितने अच्छे इंसान हैं, अभी हमारा ब्रेकअप हो रहा है, अभी कितना एमिकल भी हो रहा है, यानी इवन दो कैमरा बंद करके चीज़ें फेंक रहे हैं दूसरे पे, और ये कंप्लीटली बिजनेस डिसीजन है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं ताकि दोनों के ही करियर में जब ब्रेकअप हो रहा है, क्योंकि हमने पब्लिकली इतनी रिलेशनशिप कर रखी है, तो बैकलैश ना आए। लेट्स बी रियल, बट दिस इज नॉट समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ये लड़की कर रही है विच इज नॉट अ यूट्यूब थिंग टू डू. Now, having said that, what she's talking about is actually personal. It's actually real. In 2 minutes and she's sharing real details, जो कि मुझे लग रहा है कि outside of simply मुझे अच्छा दिखना चाहिए से बाहर चली जाती हैं. हमारी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी. Like the most people go at is, oh हमारी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, हमारे बीच में लड़ाई होती रहती थी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये वो. But she's actually sharing very very important points. One point, long distance relationship के बारे में I don't know कितने लोगों को पता है, but long distance relationship completely change हो जाती हैं, and the possibility of falling apart is very very high once long distance में जो लोग थे they meet and they start
फिजिकल रिलेशनशिप इन द सेंस फिजिकल प्रेजेंस में जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है, क्लोजनेस खत्म हो जाती है, डिस्टेंस प्रॉब्लम खत्म हो जाती है लॉन्ग डिस्टेंस की. सो अ लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स एक्चुअली एंड when the long distance problem is gone. Can you believe it? Why? Because there's so many elements in your life जो कि आप लॉन्ग डिस्टेंस से बच पाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे आप आइडियलाइज कर पाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जेन्युइनली यकीन कर रहे हो उन सारी बातों पे सामने वाला जो फोन में बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं. रियल लाइफ में आप पहली बार वो सारी चीजें, सारे के सारे एलिमेंट्स उस इंसान के जीवन के बारे में, उनकी सराउंडिंग्स के बारे में, वो जिस तरह से अपनी सराउंडिंग से डील करते हैं, उनसे आप एस्केप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. अब वो देख सकता है तुम चाहे कितना झूठ बोल लो, अब उसको अपनी उसकी आंखों से दिख रहा है कि ये तो जो ये कह रहा था, ये जैसा कहता था, मैं इतना कॉन्शियस हूं, मैं इतना काम करता हूं, मैं इतना डिसिप्लिन्ड हूं, मैं इतना क्लीन हूं, कुछ भी कोई भी एलिमेंट्स ले लो. अब नहीं है. फोन पे क्या होता है, आज मैं कुछ भी झूठ बोल दूंगा, आज मैं ये करा, मैंने इतना घंटा काम किया, मैंने वो किया, मेरी जिंदगी चल रही है, तुमसे मैं इतना प्यार करता हूं, मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. सामने में दिख रहा है ये इंसान ये कर रहा है, इसकी दोस्ती में ये प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, इस तरह से जिस तरह से जीवन जी रही है. मेरा पॉइंट ये नहीं है कि यहाँ पे जजमेंट ड्रॉ करो, मेरा पॉइंट यहां पे है कंपैटिबिलिटी के हिसाब से. एक्चुअल में फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग द पर्सन जिसको तुम क्लेम करते आ रहे थे, आई नो दिस पर्सन. कहते हैं ना, वेरीफाई करो, ट्रूथ को वेरीफाई कर लो. तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स होते हैं, बिकॉज व्हेन पीपल एक्चुअली मीट, दे एक्चुअली स्टार्ट, दे एलिमिनेट द डिस्टेंस प्रॉब्लम. Then they actually start dating for the first time. Even though वो कहेंगे हम तो 5 साल से डेटिंग कर रहे थे, हम 3 साल से डेटिंग करते, हम 2 साल से डेटिंग कर रहे थे. You actually start the dating की जो important चीज होती हैं वो आने लग जाता है, behavior and all of those things. So what she's saying actually, this has been researched, and in the research long distance relationship they have found actually में कि the biggest problem is not even the long distance. A lot of people have no problem, introverts especially. अगर आप दो introvert, you would love long distance relationship, like अरे भाई निकलना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, मैं जो पहना हूं जो भी है वो भी है, एंड आई हैव ऑल दिस लव. फोन तो फ्री है ही, अब इंटरनेट पे कॉल किया, बैठे हो आप, वीडियो कॉल कर लो, जो करना है, बैठ के मूवीज देखो, योगा. मेरी खुद की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी. व्हाटएवर शी सेड, ऑल दीज फैक्टर्स मैटर. अगर इंसान जोग्राफिकली मूव कर रहा है, भाई साहब इट्स सो हार्ड अगर तुम ओपननेस में सीरियसली हाई नहीं हो. एंड सेकेंडली अडेप्टेबिलिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी दूसरा फैक्टर होता है. अगर तुम अडेप्ट करने को नहीं होते यार, या फिर तुम्हारा जो भी नए एलिमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, इफ दे आर समथिंग दैट यूर जस्ट लाइक कि मैं अगर कोशिश कर भी रहा हूं, लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक आई कैन लिव. लाइक मे बी शॉर्ट टर्म में अडेप्ट कर पाऊंगा मैं, एंड आई कैन एंजॉय दिस फॉर अ ईयर, बट इफ आई हैव टू डू दिस फॉर 40 years, I don't think this is the life, that I can, like, just for a relationship. And that's okay. I've been pretty clear from day one, actually, how important India is to me, how important family is to me. But it's not even that, because I was planning on spending some time outside of India. I do spend some time outside of India as well. For context, again, if you're new here, I was born in the US, lived there for half my life, and then I moved to Mumbai for middle and high school, went back for college, now I'm back here, and I spend some time for work. I'm a full-time artist, content creator, entrepreneur, I guess. We have some stuff. Anyway, job description does not matter. Feed said, for example, he wants to spend more time in the US or whatever. I would have figured out, we would have figured out a way to make it work, but I do think it's important to have a base, and I've been pretty clear that Mumbai is I'd like for that to be a base, and can spend time elsewhere, or even can base myself out of the US at some point. But the thing is, he has no idea where he wants to be. He doesn't know if he wants to be in the US. He wants to. He's Doctor Strange. Do you know how many areas from how many तुम्हारे fronts, कितने सारे dimensions, कहाँ से attack आ रहे हैं? It's unanticipated. He doesn't know. He has to be in Vietnam, sometimes then he has to be in Cambodia, then he has to be in Tibet, then he has to be in New York most of the time. Avengers जब आते हैं उससे उनको मिलने के लिए अलग जाना पड़ता है. Maybe move back to Vietnam. He wants to maybe move to Singapore. Who knows? And that's the tough part, because I don't think he knows what he wants. But all he knows is what he doesn't want, which is to be here, which is okay. Which is actually a very, very, very good step. Not that he doesn't want to be with you, but in life, in human beings, to know what you want is actually most of the time a very tough question.
हमें जिंदगी को जीना चाहिए नॉट स्टार्टिंग विद द टफेस्ट क्वेश्चन. वी शुड लिव लाइफ starting from very practical questions which ease our way into answering the tough questions. What you want is it's an existential question. It's purpose related. It's meaning related. It's something जिसकी मैं अभी comprehend कर रहा हूँ अपने दिमाग में और फिर मैं कहूँ कि हाँ ये चाहिए, लेकिन फिर मैं 3 महीने या 4 साल बाद I realize ये नहीं चाहिए था, क्या fascination में चुन लिया. It's a very hard question. But what you don't want, and अगर process of elimination से तुम ये कर सकते हो कि at least I can now eliminate the things that I don't want. I am somehow, मैंने उस चीज़ को narrow down कर लिया कि ये 3-4 चीज़ें हैं. So it helps. So what he doesn't want, it's a good thing. It's a good thing for you as well. I mean, you may not realize it, but in the time to come, you will. But as a result, that means he doesn't want to be with me. When you've known someone for so long, it's been all. यहाँ पे लड़की ने थोड़ा सा she was like okay, this cue, I have to cry now because the line that is coming, this is like when you've known someone for so long, and so she like summoned up. Prolactin होता है ना, the hormone response, like जहाँ पे अगर कोई न्यूरो साइंटिस्ट देख रहा है, I think it's prolactin, which is like responsible for crying in women. It could be something else, but I think it is that. Almost 6 years of my life, it feels hard to imagine a life without them. But you also have to remember that life goes on. I was just recently actually helping a friend through a breakup. And since I was able to be very strong for her, I think it's important that I'm strong for myself. You're pretty strong. You're strong. I can see that. If you're watching this, you may have it, like you may seem like you have it pretty hard, and it's supposed to, because you loved a person. And you're supposed to grieve, but you're taking it, you're processing it, you're thinking about it, you can express it. Expressing it in itself is a very good place जहाँ पे you're not circling around what could have been, why did it happen, why it was perfect. That's the loop जहाँ पे सबसे खतरनाक जोन है इंसान का, जिसमें वो rumination में फंस जाता है. And they keep pressing the refresh button. You're at least grieving in a way. Crying is fine. सब रोते हैं. अभी आपको छोड़ के जो भी इंसान है चला जाए, एक दिन तो भाई तुम चाहे कितने बड़े मर्द हो, एक दिन तो बेड में लाइट वाइट जब बंद होंगी ना, जब तुम्हें पता है तुम भी अपने आप को नहीं देख सकते, तो रो लोगे. As well. Every relationship has good and bad, and there have been some beautiful times, and I don't hate him. I wish him all well, and I truly hope he finds what he's searching for, because I don't think he knows where he wants to be, and that's all right. My advice for a lot of people always is when they ask like, how do I find my passion, or how do I find whatever, is it's important first to know what you don't want, to find what you want, and I'm happy that he's done that. He knows that he didn't want to be here. It's okay. I mean, he's tried it out. He's made some friends, but I know it's been tougher than it has in other spaces, and I respect that he doesn't. Girl, from someone who's not in his natural habitat, to make this transition, and here's the thing, the amount of preparedness I would say it takes कि अपने दिमाग में mentally prepared आप हो कि I'm just going to leave every single cent, every single percent, I mean, of whatever familiarity I held, whatever sort of lifestyle I had become used to, and all of those things, and मैं completely adaptability में 100% almost change मारने वाला हूँ of how I live. I don't think even in Mumbai he would have needed to do that, because I can say Mumbai is incredibly progressive, liberal, and people there are like from all walks of life, and people are pretty open, and they're very welcoming. Mumbai is a very good city for, I would say, any expat, any foreigner, for example. अगर इनको settle down, honestly, Mumbai में you see foreigners, living and everything. I think it's a safe, it's good, accommodating, I would say, city. But let's just say आप move on कर रहे हो to a completely new culture. It's a challenge, and I think a lot of people will get very intimidated by that. I'm not saying your boyfriend did. I think he probably had different reasons. For example, compatibility related, friendship related, lifestyle related. I would think lifestyle would be, because our Indian lifestyle at the end is, अगर आप
It's very different life. Doesn't want us to grow older and then, resent each other because of it or whatever it might be. I'm sure some of you might be like, oh, well, then, if you weren't sure or if, something was going to happen, why did you talk about it on the internet? I waited 4 years before making our relationship public on the internet or whatever that means. And I was very clear because I thought this was it. I thought he was the one. If he decides to change his mind and he decides to come back, at this point I'm saying that I might consider it because of the deep love that I have for him. But I think you need to be very, very clear about things, when you do that. So the answer to that is I don't know. I would like to. I just, at this stage, again, I'm recording this the day after it happened, so very fresh. At this stage, whatever you say right now, I mean, give yourself some time to be resilient in your mind, and then you will be seeing things in a more, I think, structured way. I cannot ever imagine myself loving anyone else, but yeah, everybody thinks that. Girl. Don't worry. Life goes on. I truly believe that if things are meant to happen, they might find a way back, but if not, you just gotta move on with your life. I was willing to make things work, but then I think at some point along the way, in order to make big things work, you sometimes sacrifice on the small things. No relationship is perfect. We definitely had our ups and downs, and I think that I overlooked a lot of things because of this big thing somebody had done, which is attempted to move to another place. But yeah, what's the saddest part about it is we proposed several options, exploring other cities within the country, figuring out ways to split time. But when you're in a relationship for that long, you do talk about things like marriage and kids and all of that if that's important to you. And I think if you're not able to see that long-term connection and future, then it's tough. I know some of you know him as well, as in some of you may have interacted with him in the capacity of his work. He is in the education space or through knowing him through here. Please do not say anything bad or wish him bad or anything because he's a wonderful human being. What if he wasn't? He's just a person. We're all people, man. सब इंसान है भाई. कोई इंसान चाहे कितना भी घिनौनी बात भी कर रहा हो कमेंट्स में किसी को कुछ भी, वो भी डिजर्व नहीं करता. मैं बहुत सत्य बात बता दे रहा हूँ. वो मे भी रियलाइज नहीं कर रहा है, वो मे भी उस मदहोशी में है किसी को गाली बकने की, या फिर उस छुप के होता है ना, क्योंकि इंटरनेट में हम सब छुप सकते हैं. तो मैं छुप के किसी पे पत्थर फेंक दूंगा, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सिक्वेंस नहीं आएंगे. सो यस, बट कोई डिजर्व नहीं करता जिंदगी में, कि किसी को भी खराब बोलो. जिंदगी में कभी इस दिशा में जाओ ही मत. I only wish him kindness and love in this world. And when we broke up for the first time, if you've seen the video from a few weeks ago, the day after, I wrote a song. It's called Thank You Please. I released it a few years ago. Because all I felt in that moment was gratitude. I had a joke coming, I'm sorry. And I still do. He was my first love. And I am just so grateful for everything, for every moment, every big moment, small moment, teaching me about what love is, what life is. And if you're wondering if I'm going to delete all our videos or anything, no, because again, it was a part of my life. And that's why I want to be honest with you, because I know a lot of you who are part of our community. Some of you may be younger, some of you may have seen videos and thought or commented or shared a couple goals, or it might have inspired you to, be with somebody or whatever. Well, all your dreams go to hell. They just burn and fucking turn to dust.
I think you can still take all of that from it because it was very, very beautiful. And sometimes things just don't work out, you know. I think for him, nothing was wrong with the relationship except for the logistics, but he wasn't willing to work through those logistics. I was guessing that. You know, when she was talking about it, and I was kind of seeing like, oh, this is their problem. And that's okay. I mean, I have had less flexibility because a lot of beautiful things. My family is here. My career is growing here. Like I said, I'm spending more time outside of India and within India as well. And who knows where life takes you? But Si, signora. He just knew he doesn't want to be here. And my question was, where do you want to be? And he had no answer. I can't just get up and move to Singapore for the whim of it because someone isn't sure. What if they don't like it there? Then are you going to keep moving? Are you going to keep searching and being, you know, a lost soul? But if he's a vagabond, you move somewhere and it's cool, but you don't find love, you know? You know, actually, I think being long distance has been helpful because it doesn't feel as painful in some sense because I'm used to being without him. I guess right now it just feels like, oh, he's gone, but I won't realize the impact of how long or what that means till later, which is sad, but I'm sure I will find some meaning out of it. One day at a time. So move on करना है तुम्हारी जो भी सिचुएशन है. फर्स्ट थिंग, अगर तुम देख रही हो, मैं तुम्हें छोटी मोटी एडवाइस दे सकता हूँ, इवन दो इट्स अनसोलिसिटेड एडवाइस, यू हैवंट आस्क्ड फॉर इट, सो यू मे कंप्लीटली स्किप दिस. फर्स्ट थिंग, सिंपल से अपने दिमाग में रख लो, तुम्हें बहुत तेज, बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे, जैसे कभी करते हैं ना, गेट क्लोज करते हैं क्योंकि टाइटन्स ने अटैक कर दिया कि भैया गेट क्लोज कर दो, अगर गेट क्लोज कर देंगे तो टाइटन्स उस जगह फंस जाएंगे. वैसे सोचना है. तुम इस वक्त ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सामने वाले ने डिसीजन मेक कर लिया है, तुम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, और तुम अभी पूरे वीडियो में बोल भी चुके हो कि यू नो मे बी अगर चीज़ें, यू नो, आई माइट टेक हिम बैक, लाइक नॉट टेक हिम बैक, आई एम लाइक इफ थिंग्स आने वाले टाइम में टर्न अराउंड या कुछ चीज़ें बदलती हैं, सो थिंग्स माइट चेंज एंड डाटा. तुम्हें करंट जो भी दिख रहे हैं फैक्ट्स, उसके हिसाब से एज सिंपल एज दैट तुम्हें सिंपल करना है कि ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी, इट्स ओके. तो वो गेट्स को क्लोज करो. इसका मतलब ये नहीं है इमोशंस को क्लोज करो, इमोशंस को बहने दो, उनको प्रोसेस होने दो, निकलने दो. दूसरी चीज, इफ यू कैन फाइंड अ पर्सन हु लिसन्स टू यू, if there are not people like that, तुम, you know, you've been to US and find like a therapist and एक वो रखो जहाँ पे तुम लोगों का कान नहीं खा रहे हो. Because a very stupid thing people get into once they have broken up is कि वो same story repeat करते रहते हैं. And I'm pretty sure you have certain stories as well, तुम्हारे 5 साल की relationship, and you just want to talk about it and listen, and then you don't know when to stop, and everybody around you is like कि अरे भाई कुछ और, मैंने सुन लिया 40 बार कम से कम ये, अब 41 टाइम मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है. होता क्या है, तुम जितनी बार स्टोरी सुनाते हो ना, और तुम फोन काटते हो, तुमने जितनी भी प्रोग्रेस करी थी वो सब लग चली जाती है. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. तुम्हें 60 से 90 दिन का एक पीरियड रखना है. 60 से 90 दिन में फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, थेरेपिस्ट, इनको डिवोट कर दो, क्योंकि तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हें सपोर्ट फील करनी है, तुम्हें फील करना है दुनिया में कोई गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं दुनिया में लोग नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं. तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे घर में लोग होंगे, यू नो, इंटरनेट से कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता, वो कमेंट सेक्शन को भाड़ में जाए. तीसरी चीज, काम करो. जिंदगी को दिखना चाहिए कि जिंदगी आगे बढ़ रही है. मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखना चाहिए जिसके लिए मुझे कदम लेने हैं सुबह उठ के. मैं नहीं कह रहा ये तुम्हारी जिंदगी का गोल है, मैं कह रहा हूं दिन में कोई दिशा होनी चाहिए जहां पे जिस मार्ग में मुझे थोड़े से अपने स्टेप्स लेने हैं. यू नीड टू हैव, धीरे धीरे जैसे जैसे वो चीजें हैं, याद रखना हर चीज माइक्रो में इंच बाय इंच बढ़ती है. तो जैसे जैसे घर वालों से तुम रिलायंस तुम्हारा ज्यादा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ये चीज आ रही है, वो चीज तुम्हें हेल्प करेगी. थेरेपी में एक थेरेपिस्ट तुम्हें हो सकता है टूल्स बताए, सो ग्रेटिट्यूड सुबह उठ के हो सकता है तुम लिख सकते हो 5 चीजें जो मेरे पास अभी भी हैं. द फैक्ट दैट I have at this age so many resources in my life. I have a beautiful home, I have, you know, a loving parents, friends, you know, a beautiful emotional support structure. I have a career on YouTube. I have like 700k people watching me, which like
all of the things, whatever you feel, उनको लिखो. रोज सुबह उठ के first thing you need to do. Like I'm whatever you think the qualities are in you, यार मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें. So you get it right. And 90 दिन का time period दो. I promise you, you'll be fine. You'll be fine. उसमें time लगता है. And I'm pretty sure I'll tell you something also. Completely depends on person to person, by the way. But अगर आप emotional resilience के point of view से, if you've made up your mind, and I really have seen that, जो लोग people who don't make up their mind, they take the longest to move on. I have known people जो 6 साल से रो रहे हैं, 9 साल से रो रहे हैं, 9 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है, and they haven't moved on as if जैसे कल हुआ है, and they're not willing to. वो अभी भी गूगल करके स्टॉक कर रहे हैं उस इंसान को. तो there are those people as well. So, and I've known people जो 5 दिन में मूव ऑन कर गए, लेकिन वो प्यार उतना ही करते थे जितना ही करता था, because they made up their mind that it's over. I think that is a very big factor. So on the first 3 to 5 days it may hit you the hardest. But कहते हैं ना, जब strongest चीज है, फिर night is darkest before dawn. मे बी वाली सेटिंग कर लो जहाँ पे तुम्हें जो हार्डेस्ट हिट होना है, कभी ऑलरेडी रो ही रहे हो, एक्सेप्टेंस मोड में जाओ. जितना रोना है वो अभी बहुत बुरा लगेगा एक्सेप्ट करना, क्योंकि तुरंत की, लेकिन हाँ हो गया खत्म. ये मोड जरूरी है. आशाएं ओपन रखोगे, होप्स ओपन रखोगे, वो चीज़ खिंचती चली जाएगी. तो भाई आशाएं होप्स खत्म करो. उस इंसान को जो ढूंढना है वो उसकी जिंदगी है. तुम ऑलरेडी उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तुम ऑलरेडी उसको ब्लेसिंग दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई. तू जा, तो एनलाइटनमेंट तेरे को मिल जाए जिंदगी में. दैट्स व्हाट आई विश अपॉन यू. तेरे को $multi-million मिल जाए, तेरे को कहीं तू शिपरेक तेरे को फाइंड हो जाए, तेरे को ट्रेजर मिल जाए, तू पायरेट बन जाए, तुझे जो मिले जीवन में तुझे वो मिले. अभी मैं मेरी लाइफ में, क्योंकि तुम गए हो, अब मैं ये गेम नहीं खेल सकता कि स्पॉट ओपन है, वो है, इट्स ओवर फॉर मी एज वेल. वो चला गया है. आई हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड आई हैव टू नाउ हील माई सेल्फ. हार्डेस्ट चीज हो जब तुम एक्सेप्ट करते हो. 5 दिन बहुत हार्ड होगा, लेकिन 6-7वें दिन तुम जब सो के उठोगे ना, यू फील अ लाइटनेस, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे फाइनली सेटल इन करने लग जाएगी. 5 दिन में यू विल बी स्ट्रगलिंग विद इट, इट विल मेक यू फील वेरी सैड. 6ठे दिन में यू विल बी लाइक it's not that bad anymore, and you'll suddenly be like, aaj breakfast mein, let's do something else. You'll still be feeling shitty, but it'll be much better than the last 5 days. I'm sure I will write just something out of it, because besides this, music is a coping mechanism. So I don't know if you see me spontaneously post a song in the next few weeks or whatever, where that's motivated from. Hope he finds whatever it is he's looking for, wherever it is he's looking for. I don't think he knows, but also I get it. 5 years की relationship है तुम्हारी, and this was the major reason that he gave you, and this is somewhat of disappointment because तुम इस loop में वापस आ रही हो बार-बार. Like I don't think he knows. I think majority या फिर major fights happened because of this thing, where there was clarity in कि, क्योंकि you told me तुम्हारे दिमाग is like I want this long term में तुम्हारा it's clear, and then you go to a sentence that he doesn't know, and then you say the problem was logistics. So this is where the fights were happening. You know how they say love when you let them go, all of that. Like I never understood it, but I do understand now, because never knows. But you know how they say love when you. So what I was saying is, you don't think about it. What I mean is, stop thinking whether he will find his thing or not, what should he do with his life or not, will he find another love or not, when he finds where he wants to be, will he reach out to me or not. Simple चीज है, जब ग्लेड क्रॉस करते हो, his life is his life, it's not my business anymore. He can go swim naked in Switzerland में कहीं पे, he can go to Bavaria, he can go to America, he can go become a cult leader, he can do whatever he wants to. He's Doctor Strange. Okay? अब इस पॉइंट के बाद से मुझे नहीं सोचना. His life is not my concern. I don't mean his life, I mean happenings. Let them go, all of that. Like I never understood it. But if you let them go, if you love someone, let them go. I do understand now, because well, if you understand, then why are you so sad? If someone is just lost, you can't find them for them, and you can't help them find themselves. And
Well, you can. But are they willing to? See, that's the thing ना. अगर उनको एक soul या lone journey लेनी है, and they've made up their mind, and you're telling them कि no, I can help you within the realms of ये हमारा boundaries हैं, ये borders हैं, क्योंकि इस border के बाहर मैं नहीं जाने वाला. Then that's incompatibility ना. That's a definition of divergence. Proud of him for knowing what he doesn't want. It sucks that also includes me. Damn. But, you know, it's life. Life goes on. That's also a song. Like another song. Life goes on. That's just been playing in my head the whole night, I guess. I have been and going to continue to keep building, keep growing. And it's okay. I want to keep loving. I will keep loving. Romantic. While. Yeah. And और एक चीज मैं बस बोलूंगा, लड़की गलती से भी 90 जितने भी दिन हैं, तो मैं बता रहा हूँ 3 महीने, कुछ भी चक्कर में पड़ना किसी और. बहुत सारे लौंडे होंगे तुम्हें मिलेंगे, स्पेशली तुम अभी इस वक्त भारत में हो, तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे मैं पूरा कर दूंगा सारा, जितना भी तुम्हारे दिल में जितनी भी क्रेटर भरा है सारा प्यार में भर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, मैं हूं ना. अभी मत पढ़ना. 3 महीने बस अपने आप को दोस्त से शक बनने में. जब बन जाओ उसके फिर तुम वापस अपने बेस लाइन उस पर आ गए हो फीलिंग में, उसके बाद तुम्हें जो करना करो, तुम्हारी जिंदगी है. लेकिन अभी मत करना, अभी मत करना. बहुत लोग हैं जो कंधा देने के उसमें आएंगे और कहेंगे हाँ ये मेरा मौका है. हा 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 हा. I don't think moving into physicality is a coping mechanism. Doesn't work. It's on the contrary. तुम्हारा it's self-loathing है. Yeah, I've only been with one person physically, right? So for me, that also has been something that's so special. I'm really grateful to him. It was very, very beautiful. But I think the most important love thing to give is to myself. And to your loved ones. That's the thing, right? Sometimes the key to loving yourself is not from here to here. It's from here to your mom, and your mom gives you love. You're here to your brother, and he gives you love. To here to your very good friends, and they give you love. So it's both ways. You give love to others, and you receive love, and you love yourself. That's why I was saying कि जितने भी तुम्हारा social circle है उसमें घुस जाओ. Go out shopping with people. Go out have lunches with people. Go out have drinks. Listen to their stories and make a point. Please make a point कि उनसे तुम पूछो actively क्या चल रहा है, because you want to now not think about this, and you really want to for 1 second, not 1 second, at least an hour, 2 hours, just be interested in other people's जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है. It's all the love that I feel toward him I still will, and I'm sure it'll get better. Yeah. I can channel that love to myself. I'm turning 25 this year. Damn, you're a kid. Which doesn't really mean anything. It just means that I'm no longer a teenager. I'm older and should have more wisdom, quote unquote. So my wisdom for myself is just I'm just gonna focus on me, whatever that means, wherever that takes me. And I will make a video answering questions. So please do leave any questions you have in the comments below, truly, because that would help me. My question is, why is you? Make it rather than just ruminating about it. Any questions you have about the relationship? Relationship. Another question, time related था, इतना important question है, मस्त हो जाती तुम सोचोगे वो. How I'm doing, because I would have put this out a couple weeks at least after it happened. So honestly, I'd love to answer them for myself, and maybe me answering them for you will help me clarify them for myself. So anyway, lots of love. Not even gonna bother saying like, share, comments, all that. You don't need to. You know I'm gonna like, share, and comment. I'm sorry. Stupid jazz, I was about to do stupid jazz because I was like, a lot of people actually don't know. You just assume people know the stupid jazz, and I was like, people know jazz. A lot of people don't even know jazz. Stupid jazz? Highly unknown. Yeah, lots of love. Lots of love to you too. Bye. Hey! What are doing here, eh?